We'll have the whole session online, and we will have 8 short cases and then at least six long cases. So we have invited all the senior examiners across the country, so that you guys can face them and have their experience and their discussion, so that can help you in your exams and minimize your mistakes actually. Let me just see. Dr. Saad will be joining me, and we both will be coordinating these sessions. Dr. Saad, I'm muting you. Thank you, Farooq. कल का दिन obviously काफी hectic था, and I think today we have a long day as well. आपको आवाज आ रही है फारूक? जी, मुझे आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। जस्ट एक चीज वो ये कि आपने शॉर्ट केसेस सब एग्जामिनर्स को भिजवा दिए। वी हैव डॉक्टर लाल रहमान को तो मैंने भेज दिए, डॉक्टर मोहसिन को आपने भेजना है, डॉक्टर आमिर शकीर को, डॉक्टर एहसान बारी को। मैंने डॉक्टर आमिर शकीर को और डॉक्टर एहसान बारी को अभी भिजवा दिए हैं, बट डॉक्टर मोहसिन को भेज दें। मैं डॉक्टर मोहसिन को भी भेज दिए, बट आई कैन सी डॉक्टर आमिर शकीर ऑनलाइन। डॉक्टर मोहसिन जी हैं, वो भी थे अभी 2 मिनट पहले हैं वो बल्कि। चलो, आई थिंक डॉक्टर बारी का नहीं नजर आ रहा। लेट मी गिव हिम अ कॉल। मेरी वैसे उनसे बात हुई थी, तो मैं एक मिनट में वापस नहीं, करता हूं। वो है हमारे साथ हैं, वो हैं। चलो सही है। सो फारूक, हाउ डू यू वांट टू डू दिस? सर, एज वी डिड यस्टरडे, मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। फॉर द ईज ऑफ आवर कम्युनिकेशन, आई हैव म्यूटेड एवरीवन, and we will take 1 or 2 examiner and 1 candidate at a time, and I will unmute them so that for the next 7 minutes they will be unmuted and they will discuss a short case. So short case will be for 7 minutes, and then we can have a discussion of 3 minutes, or we can keep the discussion at the end. डॉक्टर साहब कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है। उसमें बस ये है कि डॉक्टर बारिया से रिक्वेस्टेड कि उनको आप स्टार्ट में ले लें अगर वो है तो। जी वो है। जी मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सर, आई टोल्ड यू टू लीव एट 12, तो और मैं डॉक्टर लाल को भी अनम्यूट करूँ। सर आप हमारे वो हमेशा से पार्टिसिपेट करते रहे, तो आप सारे जो है वो केसेस के दौरान आप अनम्यूट रहेंगे और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ सेकंड पैनलिस्ट। डॉक्टर हुसैनी, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आई थिंक आपके एंड पे है इशू, बिकॉज़ आई थिंक वी कैन वेरी क्लियरली हियर अस। तो प्लीज अपना इंटरनेट चेक करें। सो काइंडली कैंडिडेट्स रेज योर हैंड्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दीस केसेस, सो दैट हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम उनको ही लेते रहेंगे, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर नॉट कमिंग विद देयर नेम, सो उनको फिर पुकारना मुश्किल हो जाता है। So kindly just raise your hand. So MS Sultan is first to go. So we will start with the case with Dr. MS Sultan. Dr. Ahmed, मैं आपको unmute कर रहा हूँ, and so that we can start it. Dr. साथ start करें हम, मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल start करें and okay. Dr. Ahmed and Dr. Ehsan. Dr. Ehsan Bari, over to you, sir. This is इनके मेरे साथ कौन अहमद है? अहमद is the examiner. जी Dr. Ahmed, this is a child, 3-month-old baby. Can you please examine his back? Sir, I have to explain it. Yes. How would I? Just explain how will you examine the back. Describe whatever you are looking at. Sir, first of all, we will inspect the swelling, and we will see either it is ruptured or unruptured. We will see the swelling, site of the swelling. Just keep describing it. This is the swelling. It seems to be this size. Just make it up and just. इसमें आप इस तरह करें कि you imagine that you are just examining this patient. तो आप कहें कि भाई I'm examining this swelling on inspection, ये है palpation पे ये है. फिर आप जब extend करें तो हर चीज बताते जाए कि भाई imagine करें that you are doing it actually. Right, sir.
On inspection, there is a visible swelling at the lower lumbar region, and there is no scar mark present. On palpation, the size of the swelling is approximate 4 into 5 centimeters, and it is present in the lower lumbar region. Swelling is globular in shape, horizontal oriented. The skin of the swell, the temperature of the swelling to the surrounding skin is normal and comparable, and there is a visible CSF leak from the swelling. There is a transillumination sign is positive. There is a cough, and on auscultation, cough reflex is present. On auscultation, there is no bruit. And I would like to extend my examination. On extension, the baby has the club foot, and there is a no on the front. I would like to see the bladder and the abdomen and the chest, and I will on further I will examine the lips and the mouth for the cleft palate, and then I will go and measure the head circumference, and I will palpate the frontalis, and will see the face either there is a sunset sign present or not, and then I will go and look for the supplying of the sutures. So, and I will ask at the end. I will auscultate the chest and abdomen. Yes, sir. That's very good. What do you think it is, beta? Sir, this is myelomeningocele. Myelomeningocele. आपने कहा ये myelomeningocele है, तो how would you confirm beside pulsation, or what investigation would you like to do for this? Sir, I will go for CT scan and MRI. CT scan bone window, and I will go for MRI lumbosacral spine. Okay. And what else would you do? I will go for CT scan of brain for hydrocephalus and ultrasound. Okay. So how would you treat it? Sir, I will see. This is the MRI scan. Can you describe it for me? Yes, sir. This is a MRI lumbosacral spine showing hypointense signal on the lower back, and there is the thecal sac coming out from the swelling. That's it, sir. ये thecal sac है कि ये क्या है? Can I just make? Can I please make a point, Rishi? Sure, sir. But there's one thing that really troubles me. Oh, okay. Okay, sir. Sir, आप continue करें, Dr. Sam. हाँ. Can you please describe this MRI scan for me? This is the sagittal view of MRI yes, section. This is a sagittal view of MRI of dorsolateral spine, and showing swelling starting from the L1 until L5, and there is protruding. There is a hypo and hyperintense. This is a mixed intensity swelling. So, is this the placard is coming out? Do you think this is the cord coming out and sticking at this myelomeningocele में ये nerve roots आ रही हैं साथ कि ये क्या आ रहा है? ये जो the nerve roots are protruding inside the cell. Okay. तो वो जो आप white सी चीज जिसको आप कह रहे थे कि वो skin का appendages है, वो क्या कहते हैं उसको? Top of the surface को हम क्या कहते हैं? This is a placard. Placard, very good. So how would you treat this patient? Sir, first of all, I will treat the. I will look for if the patient is having hydrocephalus or not. As CT patient has a hydrocephalus,
and I will go and first repair the myelomeningocele. If the hydro is not settled, then I will go, and on the next day I will MRI go में further. हाइड्रो है इसको? CT scan में ballooning है, जी, इसमें है। lateral ventricles are enlarged है। एक ही काट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसमें लार्ज है कि नहीं है। चलिए, आई टेक इट। कितने % में हाइड्रोकेफलस होता है यूजुअली? Sir, about 70%. 20 to 80%, very good. So, in this cut, you can't be sure. So, तो फौरी तौर पे तो आप हाइड्रोकेफलस नहीं करेंगे, तो पहले हाइड्रोकेफलस करेंगे, बाद में माइलोमेनिंगोसील करेंगे। Right, sir. क्या करेंगे? वो तो पहले माइलोमेनिंगोसील करेंगे या एक ही सिटिंग में दोनों को देंगे? सर नहीं, अगर तो सर if patient has simultaneous hydrocephalus and myelomeningocele, we will go at the same time. Both surgery can be done. इस MRI में कोई चीज नजर आती है इस कट में आपको, जिसका आपको डर होगा? आप कह रहे हैं कि फुल है, इसका पोस्टीरियर फोसा कैसा है? The posterior fossa, posterior fossa is short. आपको किस चीज का डर होता है माइलोमेनिंगोसील वाले ऐसे बच्चों में? Why do you get the MR scan without hydrocephalus? Hydrocephalus is one, बाकी चीजें आपने पूरी बॉडी में तो डिस्क्राइब की, इसमें भी कुछ हो सकता है? सर क्रेनियल वर्टिब्रल जंक्शन पे कोई चीज हो सकती है? जी, yes sir, it can be the KRE2 formation. हाँ, KRE, तो आपको इसमें शक हो रहा है स्कैन में? आई नो इट्स ओनली वन कट, it's not very fair to ask this, but posterior fossa is crowded. Do you think so? जी, right sir. ठीक है, तो आपको क्या चीज का शक? KRE का, ठीक है, एक्सेलेंट। चलें आगे चलें बेटा। तो आप जो रिपेयर करेंगे, कौन सी रिपेयर करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे? Sir, we will identify the normal edge of the swelling to the skin, and we will give first of all we will give all around the incision around the swelling. बेटा उस रिपेयर को टूल करेंगे, 3 लेयर रिपेयर करेंगे, 4 लेयर रिपेयर करेंगे, 5 लेयर रिपेयर करेंगे? 5 layers. 5 के 6 लेयर्स? 5. चलें ठीक है, 4-5 लेयर्स रिपेयर। और इसको क्या एडवाइस क्या देंगे इसकी फैमिली को? Sir, we will counsel the patient that by repairing of myelomeningocele, 30 to 50% patient recover very well, and if we will not repair, then there is many chances that he or she will develop the meningitis, or there can be any worsening of hydrocephalus. इन बच्चों का IQ कैसा होगा? The IQ is very low. Very low. कितना? 10, 20, 100, 500? No idea. कितना कॉर्टिकल मेंटल होगा तो आप फैमिली को बताएंगे MRI CT MRI स्कैन में कि बच्चे का IQ है वो 80% से ज्यादा होगा? Sorry, no idea. 1.5 सेंटीमीटर का कॉर्टिकल मेंटल होना चाहिए to have at least 70 to 80% of the IQ. That's और चलिए वो तो हो गया इस बच्चे का। इसकी अम्मा को क्या और एडवाइस करेंगे अब आप? फैमिली yes, we will advise the mother to take the multivitamins like folic acids in the next pregnancy. कब से लेना शुरू करें? Sir, from the very first day before conception. वेरी फर्स्ट डे? आपको तो कंसेप्शन का कब पता चलता है खातून को? On ultrasound. जब पीरियड नहीं आते उसको, ठीक है? तो उस वक्त बच्चे की क्या एज होती है? About 1 month.
1 मंथ से ज्यादा। डॉक्टर बारी सर, मुझे क्योंकि हम वी आर लर्निंग टाइट शिप, तो मुझे सर आप बता दें, जब आपके पास एक बच्चा जो आता है जिसके पास स्वेलिंग होती है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप वो मतलब एग्जाम में ऐसे क्या वो करे और क्या चीजें एग्जाम में बच्चे वाला जो मसला है नो, ऑलवेज द प्रॉब्लम इज, डॉक्टर लाल इज ऑलवेज देयर, जो छोटा बच्चा होता है उसका एग्जाम इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। को 2-4 के बाद वो बच्चा रोना शुरू हो जाता है। वो इतना रोता है कि वो माँ भी हाथ नहीं लगाने देती। तो इसलिए यू एक्सपेक्ट कि जब भी जिसको भी माइलोमेनिंगोसील मिलेगा, अगर छोटा बच्चा होगा, बहुत छोटा बच्चा, तो उसमें ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। हमने देखना है कि जो once a candidate comes, how does he inspect it? Inspection पे बताए, examination में देख ले, palpation कर दे, size बताए, दूसरा transillumination test, फिर बाकी he would always like to extend the exam. Extend के लिए bowel and bladder की बात करें। bowel के लिए anal आपने देखने हैं, इनको आमतौर पे करने तो नहीं देते, but you know that is the most important thing। इन्होंने bladder के का, bowel का नहीं कहा, lower limb examination का इन्होंने बताया। फिर इन्होंने चेस्ट और उसका बताया। ऑस्कल्टेशन इन्होंने ये नहीं बताया कि किस लिए ऑस्कल्टेशन करेंगे, हार्ट और उनकी करेंगे, कोई डेक्स्ट्रोकार्डिया तो नहीं है, कोई और नहीं है, क्लफ्ट लिप, क्लफ्ट पैलेट का कहा। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इन्होंने नहीं बताई कि पोस्टीरियर फॉसा क्राउडिंग जो हम देखने हैं, आर्नल कैरी देखने हैं, हाइड्रोकेफलस 80% लोगों में होगा। उसके बाद क्योंकि यू हैव सो मच टाइम, दे वुड कीप यू आस्किंग फिर आपने मदर को क्या एडवाइस करनी है कि यू द मोमेंट इवन बिफोर थिंकिंग अबाउट कंसेप्शन यू स्टार्ट टेकिंग फोलिक एसिड, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल फैलेसी के अगर आप बाय द टाइम दे वुड स्टार्ट इट द बच्चे की स्पाइन बन गई होती है। ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दिस इज व्हाट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ इट। क्योंकि छोटे बच्चे को एग्जामिन करना मुश्किल होता है। 2-3 के बाद वो डॉक्टर बाकी लोग भी कहेंगे कि वो ज्यादातर यही होता है, इसका ओरल वाइवा होता है। तो एट टाइम्स इट्स वेरी वेरी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट केस। सब बच्चों को आ रहा होता है, लेकिन बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता है कि वो ये सारी चीजें पूछता है, तो कैंडिडेट एक्सपोज हो जाता है। तो ही शुड नो all these questions what I've asked him, and these are the questions I've gathered from all my other examiner colleagues. इसके अलावा इसके और कोई सवाल नहीं पूछेगा। थैंक यू डॉक्टर लाल। I guess डॉक्टर लाल आपने अगर कुछ ऐड करना है आखिरी मिनट में। इसमें इस तरह है ना, ये वो जो उसकी तस्वीर दोबारा जरा दिखाएं जो पेशेंट की आपने लगाई है। जी सर। इसमें अक्सर यानी वो डिपेंड करता है टाइम पे, लेकिन एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके डिफरेंशियल क्या है एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अमंग देम क्लिनिकली। ये जो स्वेलिंग है इसकी क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? जी डॉक्टर अहमद। जी सर, इट कैन बी द meningocele or it can be the myelomeningocele or it can be any infected. So अच्छा, how can we differentiate between meningocele and myelomeningocele clinically? Clinically, sir, a transillumination test. If there is a transillumination is positive, it means it is the meningocele. Sorry, it is a myelomeningocele, and if it is negative, then it is a meningocele. कोई और इसके अलावा कोई और फाइंडिंग्स है इस पेशेंट में जिसकी बेस पे भी, यानी देयर शुड बी सम अदर डिफरेंसेस एज वेल? There is visible black hole. What can be differences in the lower limbs neurologically? So, it's a lower limb weakness of the lower limb. If patient has lower limb, इसमें 2-3 चीजें आ रही है इसमें, लाइपोमाइलोमेनिंगोसील, मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील। वी शुड नो क्लिनिकली कि इन तीनों में जो स्वेलिंग नजर आते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्लिनिकली क्या डिफरेंसेस है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी बारी साहब ने बड़ा अच्छा सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। बस यही क्वेश्चन होते हैं जो बारी साहब ने किया आपसे। लाल कैन आई आस्क यू कि ये ऐसे के और हमेशा माइलोमेनिंगोसील केस आते हैं ना, हर एग्जाम में आते हैं बिकॉज इट्स सो इजीली अवेलेबल। तो ये एनल टोन को जज करना जरा मुश्किल होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पिन लेके एनल विंक देखना? तो जस्ट
slightly pricking the anal verge to see reaction है कि नहीं? What do you think about that? सर उसमें यस यानी हम ये पूछते हैं कि और क्या देखते हैं, वो सिर्फ बताते हैं, हम उनसे कराते नहीं है सर। यानी मैंने कभी देखा नहीं कि हमने एनल जो टोन है वो देख किससे हमने कराया है, बट दे ऑलवेज दे मेंशन कि ये चीजें हैं उसमें। कुछ चीजें ऐसे जो हम नहीं कराती, और ये बच्चे सर काफी जिस सर डॉक्टर बारी ने बता दी, ये रोते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम उनसे कहते हैं चलो ठीक है बस बार बार देख ले किस तरह आप करेंगे जिस तरह भी हमने कराया। Yes, sir. और इस बार सर हम अभी फैकल्टी में हमने अभी ये रिकमेंडेशन भी दी है, शायद नेक्स्ट एग्जाम में इस महीने इसके बाद, कि कुछ चीजें हम वो करेंगे, हाई ब्लड टाइप शायद केसेस होंगे जिसमें जो छोटे बच्चे मालूम मेनिंगोसिल के, शायद इसको हम नहीं लाए और डायरेक्ट इस तरह जिस तरह अभी हम कर रहे हैं। सो द एग्जाम विल बी इन सम शॉर्ट केसेस लाइक दिस वन। तो इस अगर ऐसे केस में तो एक और बात मैं जस्ट करना चाहता हूँ, वो कैंडिडेट ने कहा कि जी उसमें से CSF लीक कर रहा था, उसने ये बात की ना कि CSF वाज विजिबल, फिर अगले जुमले उसमें कहा कि फिर मैंने ट्रांस इल्यूमिनेशन किया। यार ये कैसे हो सकता है यार? यस इट कैन नॉट बी डन सर। तो हमें तो थोड़ा सा वो भी तो सोचे ना बंदा यार कि आप कर क्या रहे हो। नहीं तो सर इसके नंबर घटते हैं ऐसे, दे कैन फेल सच शॉर्ट केसेस। तो इसमें whoever that doctor was who did that one is, I think he did very well, उसने सारी बातें बताई, but also मतलब unthinkingly ना बोलो ना, don't say he's leaking CSF and I want to do trans illumination at the same time. बिल्कुल। Okay, I guess we can move towards the second case. Yeah, move. And for second case, we have Dr. Amir Sagir. Dr. Amir Sagir को unmute करता हूँ, and Dr. Osama, you will be the candidate. Dr. Amir, you can unmute yourself. Okay. And Dr. Osama, Osama, you can unmute. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Yes, Osama. So this is the case 2. Over to you, Dr. Amir. Okay. We have 35-year-old female tendency to fall on left side. Do the cerebral sign. Assalamualaikum. I would like to first introduce myself and ask consent from a patient. If there's a female patient, I would like to have a female chaperone with me. And then after that, I will start from his eyes. I will move my hand and check for nystagmus. And then later on, I will ask her to repeat a 3-syllable sentence like Kustuntonia, Lam Lota Bebaki, repeat again and again to see if there is a scanning speech. I will ask her to lay her both hands straight up to see intentional tremor. At the same time, I will check the rebound phenomena on the both hands. If there is a rebound phenomena, then later on, I will ask her to do repeated movements, alternate movements on hand, on one hand, or one hand on other hand. And then I will ask to do from the left hand again to do repeated movement. And then I will go for, I will ask her to take lower limb, and then I'll ask her to take out the shin and rub heel and rub on the shin of the other leg, and ask her to do it again on the opposite side. And then I will check the pendular knee reflex, and then I will ask consent for her to check the gait, and then ask her to walk, and then ask her to walk in a straight line. After she will walk in a straight line, I will ask her to bring her legs close, and then ask her to close her eyes and support her and let her know that she won't fall even if she will sway. And then I will extend my examination. On extension of my examination, I would like to do fundoscopic examination to see if there any kind of papilledema, and then look for 7th and 8th cranial nerve at the same time as well. Okay. What would you like to see in eye? You said papilledema. Anything? Sorry? You have time? We have 5 minutes. Yes. Okay. You still have time. Anything else you want to see? I would like to see, as I said, I would have seen a nystagmus in an eye, facial nerve and the 8th cranial nerve, for and the lower cranial nerve for the facial nerve, 8th cranial nerve, and then I will follow to the 9th and 10th cranial nerve to see if the gag is present, and then shrugging of the shoulder and the tongue.
Okay. And then I would like to check for the long track signs for Babinski, if there's any long track sign positive. Okay, if you are mentioning cranial nerves or the lower 6 cranial nerve you are mentioning, Yes, sir. To test all these lower 6 cranial nerves. Sorry, sir. मेरी बात नहीं समझ आई. You want to see the lower 6 cranial nerves, right? Yes, sir. You already told me how you check the lower 6 cranial nerve. I will start from the patient level. I will ask I will ask the patient to frown and check frowning on the bilateral forehead, and then do one by one. Okay. 7. How you check 7? The usual thing. Check. Yeah, I will ask patient to frown on forehead and see if there's frowning is present. Then I will ask her to close her eyes and I will try to open it to see if there's any weakness in opening. And then I will ask to show the teeth. At the same time, I will ask her to blow air from her cheek and then press on the both sides for 7th cranial nerve to see if there any lower motor neuron or any upper motor neuron lesion. And then I will go for, I will check the ears for any obstruction in external auditory matters. And then I will whisper in one ear. And then I will repeat in the second ear if she can hear from the both sides. And then I will do Weber's. If it is lateralized to, I will check if it is in a midline or it is lateralizing. Sorry, how you check Weber? I will first ring the tuning fork and then let her hear that this is a vibration. Then put the tuning fork in the middle of forehead and then ask patient if there's any if there's a lateralization of this vibration to any ear or both ear have the same vibrations. And then I will go for 9th, 10th cranial nerve examination. I will ask her to open her mouth and look for uvula. Test with Weber. Sorry. You like to test? Sorry. Usually, along with Weber, what else you? If ever the Weber will be lateralizing, then I will go for Rennie's test. Good. And what is Rennie's test? Is we check air conduction and bone conduction. I will let the tuning fork ring, and then after ringing, I will ask the patient that I will put this on your back of a head at a mustard tip. At the time when it will stop, you will stop feeling vibration. You need to let me know, and then I will bring that tuning fork in front of an ear and ask her if she can still hear a ringing. If she can hear, then it is normal. If she cannot hear, then it is not normal. It is conduction abnormality. Then I will go for 9th and 10th cranial nerve. On 9th and 10th cranial nerve, I will ask her to open her mouth and look for a uvula. And then I will ask her to say ah. If she will say ah, her uvula will be midline and it is movable, soft palate will be movable, then I think the 9th and 10th cranial nerve are intact. If ever they will not be intact, then I will ask permission for a gag. And then I will take a swab and touch the posterior pharyngeal wall. If the patient will have a gag positive, then she will have a reflexive movement of palate and she will cough. And then I will do on the opposite side. And then later on, I will go ask her for the shrugging of shoulder and ask her to move her head from side to side and check sternocleidomastoid on the both side. And then I will ask her, and then I will check the power of the tongue, ask her to protrude her tongue. And then after she will protrude, then I will look for any fasciculation or any visible thickening or thinning. Can we move on towards investigations and management? Okay. Okay, what investigation would you like to do in this patient? I would like to do CT scan brain followed by MRI brain with IV contrast. Okay, we have MRI. What do you find? This is an MRI brain plane which shows one single sequence, which is most probably a T1 with the contrast. It shows hypo-intense lesion which with an hyper dense area in the periphery. It is compressing a fourth ventricle at the same time. It is compressing the brainstem as well. I cannot appreciate edema all around the lesion. What is your differential diagnosis in this case? As it is a cystic lesion with a solid nodule, so
and the age was the patient. Sorry, I couldn't able to recall the age of the patient. So I think it can be either a pilocytic astrocytoma or it can be hemangioblastoma. Okay, why hemangioblastoma? As the solid nodule is abutting on a periphery, and there's a cystic and solid lesion. I can see a small vessel, if I'm not wrong, in this contrast area. Mm-hmm. And then it is mostly on a periphery. That's why. Okay, how you manage this patient? As if I have a strong suspicion of hemangioblastoma, I would like to ask the history of patient. If there's any family history of such kind of lesion, and then I will screen for hydrocephalus. If she have an hydrocephalus, then I will counsel her that there is two parts of surgery. The first we would like to address and hydro, and then we will go for you like to I'm sorry, what would you like to know about the family history? In a family history, I will first thing I would like to ask her if there's any such kind of lesion in any member of the family, and then I will ask about the any visual, if there any family member have optic retinoblastoma and pheochromocytoma, pancreatic tumor, renal cell tumor, and then any syndrome in this kind of patient. Yes, this kind of patient are mostly associated with Van Hippel-Lindau syndrome. Mm-hmm. Okay, but I'm asking about management. Okay, we go back to management. How you manage this patient? If the patient will have a hydro, so there are two kind of. So we can first either manage an hydro and then later on go for a primary surgery of a lesion. For primary surgery of the lesion, we need to we need to address it like an AVM. We won't take it a piecemeal lesion. We will do posterior fossa, suboccipital posterior fossa. Want to manage this cystic lesion as an AVM? As the hemangioblastoma is a highly vascular lesion, there will be a lot of vessels, and then that's why we need to coagulate it first all around, and then we can take it out. First, we will tie the arterial feeder, and then at last we can tie the venous drainage of the area. The cyst, we will just puncture cyst and then aspirate the fluid rather than excising the cyst as well. Okay, you just want to aspirate the fluid? Yes. During your procedure? Yes. Anything else you like to do? No, I will just aspirate the fluid and treat it, the solid part, size the solid part, and then come back. How you treat the solid part? So last 30 seconds. Solid part should be treated as an AVM, as I said before. If you can't find what you do? Sorry? If you can't find the solid part during your procedure? If I can't able to find a solid part, what I can do? I can take help of ultrasound, which we usually does not do in our setup, or if ever there is a patient, there was strong previously pre-operative planning, there is a suspicion that I would not able to find a solid part, I could have neuronavigatory protocol MRI to trace it out. What size of lesion you can trace out with a neuronavigation? I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. I'm not sure about the size. Okay, you want to go, just last question, you want to go for the cyst or the solid part? Well, my target would be the solid part. At the same time, I would like to decompress and aspirate the cyst. Okay, if you resect the solid part, yes. That's all, and the patient will not regrow this lesion again. You can tell them, I've resected your solid part, and you will not regrow this lesion again. Can you say this to patients? There is a higher rate of reoccurrence in these kind of patients. If it turn out on a biopsy, I will wait for a biopsy.
If it turned out to be a pilocytic astrocytoma, then I'm sorry, sir. But as you mentioned, you are going for the hemangioblastoma, right? Yes. If it turned out to be hemangioblastoma, I will let the patient know that there is a high rate of reoccurrence, which is almost. Dr. Rashid, you must want to end something. Sir, please. So we are running short of time, so we can just end this case here, because this is a short case and the discussion can continue for long. Farooq, एक कैंडिडेट ने कोई क्वेरी लिखी थी about the sequence of examination comment में ना, can you request Professor Lal to answer that? वो sequence के ऊपर थी कि हम अगर cannula के examination में fundoscopy इसमें short case में when you are asked to do cerebellar examination, तो इसमें यानी lesion posterior fossa में है, तो पहले आपने cerebellar examination to detail में करनी है, and then we should go for the relevant examination जिसमें examiner से पूछना होता है, और उसी sequence में यानी इसमें चूंकि फंडास्कोपी के लिए इतना टाइम नहीं होता, 5 मिनट्स का टाइम है, तो आप एग्जामिनर से पूछ ले शुड आई गो फॉर फंडास्कोपी, तो अक्सर आपसे कहें कि ठीक है छोड़ लो, क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि फंडास्कोपी के लिए अलग 2 मिनट चाहिए, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता। लेकिन आप जो है ना सीक्वेंस वही फ्रॉम अबाउट डाउन, इसमें आपने फंडास्कोपी का पूछा, आपने क्रेनियल नर्व्स जो लोअर से क्रेनियल नर्व्स से करे, और इसमें जो है ना क्या कहते हैं ब्रेन स्टेम के लिए चीजें कर ले, तो वही सीक्वेंस है। और जो रेलिवेंट एग्जामिनेशन है इसमें डिटेल नहीं करनी होती, इसमें जस्ट टू शो द एग्जामिनर दैट दीज थिंग्स आर इन माय माइंड, तो वही सीक्वेंस है, पहले सेरेबेलर और उसके बाद फंडास्कोपी को पूछ लें, क्रेनियल नर्व्स कर लें, और ब्रेन स्टेम के लिए जो प्लांटर्स और डिप्लोपी वगैरह को पूछ लें। जी ओके, थैंक यू सर। एंड द नेक्स्ट केस के लिए मूव करते हैं सर। डॉक्टर लाल सर, आप एग्जामिनर होंगे थर्ड केस के लिए। ठीक है। एंड डॉक्टर इरफान मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी डॉक्टर इरफान, ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा इसमें अच्छा, मैं इरफान को पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। डॉक्टर इरफान मेरी बात सुन लें, यानी इसमें यानी ये इमेजिन करें दैट यू आर एक्चुअली इन द एग्जाम, तो इसमें आप जो है ना अपनी इंट्रोडक्शन कर लें, फिर वैसे परमिशन इमेजरी परमिशन ले लें, फिर लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन करके नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग लाइक दिस वन, और जब आपने एग्जामिनेशन लोअर लिम्ब की पूरी की, एंड देन इफ यू वांट टू एक्सटेंड एग्जामिनेशन, फिर अगेन आपने परमिशन लेनी है और कहीं पर मैं ये अभी ये कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, इस तरह करें। यानी एक्चुअली यू इमेजिन दैट यू आर इन द एग्जाम, उसके बाद फिर आपसे हम शुरू करेंगे। तो ये 25 years old मेल पेशेंट है विद लोअर लिम्ब वीकनेस, डू लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन। और मैं बताऊँ लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिन लोगों ने एग्जाम दी है और या दोबारा अपियर हो रहे जो पास हो चुके हैं, तो हर एक बंदे ने जरूर लोअर लिम्ब फेस की है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लोअर लिम्ब के बारे में इतना बताऊं कि जितने शॉर्ट केसेस हैं सबसे ज्यादा टाइम लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन पे लगता है, तो ये आप लोग बार बार करें, भी कुछ दिन है आपके पास, यू शुड प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली। जी सर, आई विल अप्रोच टू द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। पहले अपनी इंट्रोडक्शन कर ली, सर पेशेंट की, यानी ये सपोज करें आप पेशेंट के पास जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है, मैं आपके पाँव का मुआयना करूंगा, इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। देन आई विल एक्सपोज द पेशेंट। आपके पाँव को मैं थोड़ा खाली करता हूँ। आफ्टर एक्सपोजर आई विल स्टार्ट इंस्पेक्शन। और आप इसको जो है ना प्रेजेंट टेस्ट में प्रेजेंट करें, नॉट इन द फ्यूचर। I am exposing I will ask for proceeding with limited exposure from the examiner. Sir, could I proceed with limited exposure? Ideally, I should expose the umbilicus. Okay. After exposure to the mid thighs, I am examining the thigh. I'm inspecting the lower limbs. I'm asking the patient, can you raise the right lower limb and then the left lower limb? I'm checking the global power of the lower limb. After that, I'm also inspecting the back of thighs and legs. And after checking after inspection, I'm coming to the pulses. I'm checking the pulse. The pulse is normal. Then I'm going upward and checking the temperature. If the temperature is also normal, then I'm going fasciculation. By looking at in the torch light, the fasciculation is normal. Then I'm coming to the tone of the patient. I'm asking the patient that please
lose out your joints. I'm checking your joints so that I can check it well. If the tone is, I will start checking of the tone starting from the hip joint, from first on the right side, then on the left side, then I'm coming to the knee joint, first on the right side, then on the left side, then I'm coming to the ankle joint. If the tone is normal, then I'm moving to the power. I'm checking the power first and upper thigh for L2. L2, then I will coming for the knee extension, that is L3, and coming for the foot dorsiflexion, that is L4, and I'm coming for the ankle plantar flexion, this is S1. I'm coming for the, I'm checking the, I'm doing it in the symmetrically, first on the right, then on the left side. Now I'm checking the thigh, the toe dorsiflexion. I'm checking it's the power of the 5. Up to that, I'm instructing the patient that it's the hammer. It is a rubber hammer. It will not harm you. I will demonstrate it on myself that it is not harming. And then I will start knee reflex symmetrically, first on the right side, then on the left side. Then I will go for the Achilles reflex, first on the right side, then on the left side. If the tone of the patient was normal, and the tone of the patient was normal and the reflexes were normal, then I am going for the SLR, first on the right side, then on the left side. After SLR, I am checking the plantars of the patient by instructing the patient that I will rub this key with your sole, and it will just feel uncomfortable a little bit, but will not hurt you. After the checking the plantars, I will check the position sense. I will instruct the patient that this is your toe, it is moving up and it is moving downward. After instruction, I will ask the patient to close your eye. And the closure of the eye, I will check first the right side position sense of the toe, then on the left hand the position sense of the toe. After that, I will give the reference. I will hold the toothpick, and I will instruct first on myself that this toothpick, it is not hurting, and it will feel you like that. I will first demonstrate on his hand, then on the forehead. And after that, the reference point, I will tell the patient, close your eyes. I'm checking, I will start sensation first from the S1, lateral side of the mediolus, then symmetrically first on the right and on the left. And I will ask the patient that it is either similar to your forehead or is there a difference and is increase or decrease. Then I'm coming to the left mediolus, then I'm coming to the base of the back toe, the base of the toe. For L5, L4, L5, and S1, then coming upward the medial side of the knee, check for L3, then for L2, and then I will take the cotton. I will demonstrate to the patient that it will feel you like that. I will put it on the forehead. Now after that, I will ask the patient if it is same on both sides and start from the medial side of the mediolus, lateral side of the mediolus, and at the base of the toe, then into the medial side of the knee, and then up the mid of the thigh. After that, I will ask the patient to turn the side. When the patient is turned the side, then I tell the patient that I'm going to touch the area, the perineal area, and if it is feel like forehead to you, then you should tell me. And I will do the cardiac I will do the check the cerebral anesthesia. And after that, I will ask from the patient from my examiner for extension of examination. Extension of examination, I will check the back, I'll check the symmetry of the whole spine, I'll check the superficial tenderness, I'll check the deep tenderness. Okay, good. इसमें फॉर क्या फाइंडिंग्स इसमें? अच्छा, आपने सेंसेशन कैसे चेक की? Sir, sensation first I will demonstrate the patient. I will give the reference point to the patient. I first touching his hands, then touching his forehead. And after that, I'm instructing the patient to close the eye and will tell me if it is similar to your forehead or decreased on the forehead. And then I'll start from the lateral side of the mediolus. It is S1. Then on the base of the toe, it is L5. Then on the medial. Okay, इस पेशेंट में ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने लोअर लिम्ब भी सही एग्जामिन किया, आपने एक्सटेंशन भी किया, आपने एग्जामिनर से भी पूछा, सो इट वाज अ गुड एग्जामिनेशन, बिल्कुल आपका सीक्वेंस भी ठीक था. और इस तरह करना होता है, पहले एक्सपोज करे, और उसमें दो ही सिस्टम देखने होते हैं ना, मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम. उसमें जिस तरह टोन है, गर्थ है, अपने पावर देख लिया, अपने SLR देखा,
अपने reflexes देखी, and then you came to the for sensory system जिसमें आपने sensation देख ली. इसमें एक चीज अगर टाइम आपके पास है और पेशेंट स्टेबल है तो आप पेशेंट को थोड़ा सा उठा के चला भी सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई उसकी वो कैसी. इसमें आपने हील शिन नहीं किया वो भी करना होता है, लेकिन उसमें आपको कोई बंदा फिल नहीं कर सकता. और उसमें आपने सडन एनेस्थीसिया के लिए पूछना होता है एग्जामिनर से, शुड आई डू इट. अक्सर लोग आपको मना करते हैं कि जरूरत नहीं है, कोई फीमेल पेशेंट हो उसको नहीं करना होता. और बैक पे आपने इंस्पेक्शन करनी है टू सी फॉर एनी स्कार, अगर कोई पहले ऑपरेशन हो चुका हो या डिफॉर्मिटी है, कोई लीकेज या कोई डिस्कलरेशन है, एंड देन यू कैन लुक फॉर द टेंडरनेस. और उसके लिए जिस कल हमने डिस्कस किया था. ओके, इस पेशेंट का राइट एसएलआर रिस्ट्रिक्टेड है और उसका डॉर्सन पे यानी L5 की सेंसेशन कम है. व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज द लीजन? Sir, if the SLR is restricted and the sensation on L5 is decreased, then I am suspecting some lower lumbar spine. So, what is your differential diagnosis? I forgot the age of the patient, but I am suspecting it could be. यानी ये जो पेशेंट इसकी एज जो ना, ये मिडिल एज पेशेंट है, उसकी आपने वही चीज कर ली, तो इसमें क्या डिफरेंशियल क्या बनता है आपका? Sir, it could be degenerative. It could be neoplastic, and I would ask about the trauma, and then it could be traumatic. Trauma की हिस्ट्री नहीं है उसके, trauma की हिस्ट्री. I keep on top degenerative, and then on I would put the neoplastics. Okay. So what type of neoplastic can be in the lower lumbar region, as you said that there might be? SLR is restricted, so I would suspect any neuropibromas. Okay. और degenerative में क्या चीज आप include कर रहे हैं differential में? It is the young age, so I would suspect it any disc prolapse. कोई इसके अलावा कोई और चीज? Any disc prolapse, or it could be any degenerative. Okay, so how can we differentiate clinically between disc prolapse and stenosis? Sir, in the stenosis, usually the patient SLR is normal. The patient is not having any radicular pain, and in the disc prolapse, the patient could have, if it is centered, the patient could have Neurosurgery claudication, but most of the time the patient presents with radicular pain and the SLR is restricted. Sir. Why there is claudication when there is stenosis? Sir, because in the stenosis, the patient usually presents with claudication because when the patient extends back during walk, there is usually embulking of the ligamentum flavum occur, which cause the canal stenosis, and due to that canal stenosis, the blood flow routes is obstructed and the patient gets okay, so how you will proceed further? What investigation you will do in this patient? MRI lumbosacral spine. So what do you want to see on MRI? I would like to see, sir, an MRI the any pathology that is compressing the root or thecal sacs. Okay, आप कोई X-ray करना पसंद करेंगे इसमें? Yes, sir, I would. Yes, this is radicular pain, so I could flexion extension X-ray in this patient too. अच्छा, how can X-ray help us generally in spine? अगर ये lumbar का है और X-ray में क्या चीजें आपकी नजर आ सकती हैं? In X-ray, it's readily available and it is short time consuming, so we can see once if there is any fracture, we can see any instability like dialysis if you are doing it a dynamic X-ray. So the X-ray will help us in like that. और X-ray में और क्या चीजें नजर आती हैं जो आपको हेल्प करते हैं डायग्नोसिस में? मैं जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन. फरूक, MRI जरा दिखाएं. Okay, so read this MRI. Sir, this is sagittal and axial reconstruction of situated MRI brain. MRI is lumbosacral spine of the patient. There is little section here in the compression from interior at the level of L4-5, and the disc height is also decreased. So what is your diagnosis? My diagnosis. Okay, so what you will do with this patient? Sir, the patient SLR is restricted. The patient, I will see patient pain.
So what are the different surgical options in this patient? One surgical option is open laminectomy and discectomy, and another option is could do minimal invasive endoscopic discectomy. In this patient, another surgical option is fenestration. Okay, so how fenestration is done? Briefly, has been done on the one side of the spinous process. When reaching to the dissection should be done in this patient on the right side. When reaching to the lamina, so we would remove the ligamentum flavum on the right side, and we would remove just lower 1/3 of the lower 2/3 of the L4 vertebra and upper 1/3 of L5 vertebra. Then we would reach downward to the thecal sac. We would retract the thecal sac medially, and there is protrusion present. We would remove this. Okay, so what complication can occur because of this fenestration surgery? Sir, the top fenestration is there could be a high chances of the root injury because the root is usually bulging upward and it is lying tense over there, and the surgical corridor is too narrow. So the first chance is the root injury. The second is incomplete removal of the disc because there is no such wide exposure, operative field is present, exposure is present. And the third is we could drill or remove the facet because we are not getting that much exposure. So we usually go laterally and take out the facet, and the patient get instability. Okay, so what are the limitations if we are going to remove part of the facet? How much you can remove it? Sir, up to 50% we can remove. 50%. If more than 50, what will happen? Then the patient will present with instability. Sir, the patient. What you will do then? Sir, then we will do fixations. Okay. This patient comes to you after surgery, 10, 12 days after surgery with severe pain. So what do you suspect in this patient? The first thing came in my mind would be a discitis. So what you will do for that? Then I would do some blood workup and the radiological workup. The blood workup I would do the CBC, CRP, and ESR, and the radiological workup I would do, sir, the MRI lumbosacral spine with contrast. Okay. So how can we differentiate between recurrent disc and if there is fibrosis there? Sir, we would usually differentiate this with the contrast. If it is disc, the disc is not usually taking the contrast, and if there is fibrosis, then it would usually take the contrast. In the disc, sir, root is pushing medially, and in the contrast, the fibrosis, it is usually holding the root, so to lying laterally, sir. Okay. Okay, good. 5 मिनट तो हो गए मेरे ख्याल में फरूख हमारे। सर 15 मिनट्स हो गए सर। गुड यार, आपका बिल्कुल, यानी वायु इस तरह चलता है और यही चीज होती है, इसमें कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, सारे आसान क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वहां पे अगर शॉर्ट केस में मैं एक चीज बताऊं, अगर आपकी फाइंडिंग सही आ गई और जिस तरह कल भी हमने डिस्कस किया, ये जब पेशेंट सेलेक्ट होते हैं, जिस तरह शॉर्ट केस हमने सेलेक्ट किया, तो ये शॉर्ट केस एग्जामिनर पहले देखते हैं, ये सारे टेस्ट हम करते हैं, उस पर फाइंडिंग लिखी जाती है। अगर आपने सही परफॉर्म किया, एग्जामिनेशन सही किया, अपनी फाइंडिंग सही आपकी निकल आई, वायु इंतहाई आसान होता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने उसकी फाइंडिंग्स पिक नहीं की तो आपकी डायग्नोसिस गलत होगी और उसमें टाइम भी इतना कम होता है, तो बाद में चीज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सो एनी हाउ गुड, आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंट भी किया और आपके क्वेश्चन भी बड़े अच्छे थे जो आपने जवाब दिया। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर मोहसिन, आप एग्जामिनर होंगे नेक्स्ट केस के लिए, एंड डॉक्टर अबूजर आप कैंडिडेट होंगे। जी डॉक्टर मोहसिन, आप अनम्यूट कर सकते हैं। फारूक, इसमें वही था जो तुम्हारी स्क्रीन पे टाइम आ रहा होता है, काउंटर, वही हमें फॉलो करना है? जैसे आइडियली यस। आइडियली यस, ठीक है। आई थिंक वी कैन स्टार्ट। सॉरी, आप बात कर रहे हैं, सॉरी, एग्जामिनर के लिए वही जो कैंडिडेट के लिए वही इंस्ट्रक्शंस है कि ही शुड प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टेंस, और ये इमेजिन करे को बस आपके सामने कर रहा हूं। जी डॉक्टर अबूजर। अस्सलाम वालेकुम सर।
Assalamualaikum. So, Abuzar, this is a 7-month-old baby, and the command is you examine the head. So, obviously, this is not a real baby. So, just start telling me what are the things that you will look for and what are the findings that you can pick in this picture. I will after introducing myself, will take consent from his mother to examine the child. So on inspection, I am checking the overlying skin or frontal boxing or a craniofacial disproportion, or there is a, if I show sunset sign and overlying skin is either a shiny thin or if there is any visible vessels present. On palpation, I will check anterior frontally, either it is wide open, a bulging or tense, or I will check a corner suture if there is a splaying of suture present or there is a ridging of a sagittal suture present. I will also check the posterior frontally, and I will do transillumination test, or I will check a crackpot sign. And I will also palpate the superior sagittal sinus and a metopic suture and corneal suture. And I will measure the head circumference. And after that, I will ask for permission. I will check the bruit. And after that, I will ask the examiner to extend my examination to see all neural axis examination, in which I will check any tuft of hair or encephalocele present over the cervical spine or posterior fossa, or if there any swelling at the back of the lumbar or sacral or dorsal region. I will check the annulus tone, patulous anal tone, and I will also check both lower limb discrepancies or movement if there is any movement in the leg. I will check the abdomen for bladder palpation, or I will auscultate the chest for dextrocardia. I will check a cleft lip and thyroglossal shift. Okay, can you see any positive findings in the picture? So there is a obvious frontal bossing. Eyes not showing a sunset line, and there is a elongated head, and so what are your differentials? So my differential diagnosis, if there, I will ask the age of a patient and a diameter. I'll give you some findings. This is a 7-month-old baby. His frontal nail is closed on your examination. There is no proptosis, and his power in the lower limb is 5/5. So it is frontanalis, anterior frontanalis is closed. There is a cranial synostosis. I will check the corneal suture or a metopic suture. Okay. If it is I will also check the unilateral or bilateral corneal suture closure, or if it is a cranial synostosis or sagittal suture. For sagittal suture. So how will you investigate? Sir, I will do CT scan bone, a 3D bone window. Okay. Any other test would you like to do? Any? Okay, I think let's do CT scan. Jesus first. Okay, you ordered the CT scan, and this is the investigation that the patient came up with. Okay. Can you describe the findings? Yeah, this is CT scan brain. Yes. Is showing there is a cranial synostosis in the superior sagittal sinus. There is a obvious ridge present, and there is a lambdoid suture and corneal suture are present, but sagittal suture are closed.
Hematopic suture are also closed. What is your diagnosis now? Sir, it is scapucephaly. Okay, and what are the treatment options that you can go with? How will you advise the family? Sir, I will ask the patient age. Patient is 7 months old. We know that. 7 month old. Yeah. 7 month old. I will consult the family regarding the developmental abnormality, what he can face. I will provide option for a surgery. What can he face? So there is an abnormal growth of the skull. Yeah. So what could be the problems? What could be the findings that the baby can have, and what can be the potential problems that he can face? Sir, sorry sir. बच्चे को क्या मसला हो सकता है? माँ कहती है कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी तो क्या मसला हो जाएगा इसको? सर अभी इस सिचुएशन में तुम एग्जामिन करो तो बच्चे को क्या क्या मसले हो सकते हैं? सब there is as a bone a sagittal suture are closed. There is a abnormal skull, or there is also brain developmental delay हो सकता है फिर इसमें बच्चे को. अभी जो 7 month का है 5/5 पावर है, सेटिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी उसमें. After 1 year, 2 year, he can develop a developmental growth because a skull not growing as much as it can be. इसमें अगर हम MRI करा लें हमें फायदा होता है? Yes sir, we can do MRI. हमने MRI नहीं कराया था तो अब हमने चलो एक MRI ऑर्डर करते हैं. उसमें अगर ब्रेन में हमें क्राउडिंग मिलती है तो क्या करेंगे? अगर नहीं मिलती तो क्या करेंगे? तो ब्रेन में क्राउडिंग मिलती है. हाँ, मतलब प्रेशर है, रेज ICP के साइंस मिल रहे हैं. So अगर raise ICP, if there is a sign of raise ICP, then we will consult again a family. They would go for a surgery in which we can do a craniectomy to open the sutures so the brain have space for growing. कौन सी craniectomy करोगे? Sagittal इसमें strip craniectomy कर सकते हैं. 7 month पे सर हम we can do pipe procedure. And we can also do extracalvarial reconstruction. वो कहते हैं हमने एंडोस्कोपिक करानी है. एंडोस्कोपिक कब करोगे? So एंडोस्कोपिक within 3 month हम कर सकते हैं. उसके बाद क्यों नहीं? तो उसके बाद 6 months का होता तो सर रिकमेंडेड 3 month है, उसके बाद का आईडी नहीं है. 3 है या 2 to 6 है? तो 1 to 3 है. नहीं, 1 तो बहुत छोटा हो जाता है. और अगर इसमें साइंस नहीं मिलते फिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है तुम्हारे पास? रेज ICP नहीं है तो सर लेकिन स्क्रिप्ट sagittal suture are also close. We can also we have to go for surgery. वही माँ बाप कहते हमने नहीं करानी. क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चे में अगर नहीं कराएं? सर डेवलपमेंटल ब्रेन डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है इसमें. What would be the problems that the child can face? सर हाइड्रोसेफलस डेवलप हो सकता है आफ्टर कॉस्मेटिक इशू हो सकते हैं, कॉस्मेटिक की वजह से. ठीक है, हो जाए. और स्पीच डिले का मसला हो सकता है कोई? बातचीत बच्चा बात देर से कर रहा होता है. यस सर. लो सेल्फ स्टीम. यस. दूसरा जो है बाकी भी डेवलपमेंटल इश्यूज जो हैं वो साथ अगर सिंड्रोमिक है तो हो सकते हैं. क्या क्या कॉजेज होते हैं?
सर इसकी क्रेनियोस्टोसिस Yes, what are the causes? Causes are. I'm sorry, तो मैं गंदा टॉपिक किस्मत से मिला है लेकिन चलो, इफ यू प्लान फॉर सर्जरी, क्या एनेस्थीसिया की प्रिकॉशंस या कॉम्प्लिकेशंस तुम्हें पहले से देखनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ तो तुम्हें पता है कि वो तैयारी करके नहीं आते, सर्जन को ही सारा कुछ देखना होता है। तो 7 मंथ ओल्ड बेबी का तुम ऑपरेशन प्लान कर रहे हो, तो क्या क्या चीजों का तुम्हें ख्याल रखना होगा? सर ब्लड लॉस का अरेंज करेंगे, ब्लड लॉस हो सकता है उसका अरेंज करेंगे, ब्लीडिंग प्रोफाइल चेक करेंगे बच्चे की, एंड उसका कोई थैलेसीमिया वर्कअप करवाएंगे, कोई पेशेंट को, बच्चे को थैलेसीमिया या कोई ब्रेन ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, रूटीन वर्कअप कर लिया हमने। सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्जरी में so patient को on in operation theater we will keep the operation temperature normal, cold temperature में नहीं उसको ऑपरेट करेंगे, हाइपोथर्मिया अवॉइड करोगे, हाइपोथर्मिया को अवॉइड करेंगे, एंड इसके बाद आई थिंक टाइम हो गया हमारा। यस सर, टाइम इज अप। सही सही। एनी अदर एग्जामिनर वांट्स टू आस्क और ऐड समथिंग? जी, डॉक्टर लाल, डॉक्टर एहसान, डॉक्टर आनिफ, एनी कमेंट ऑन द केस? सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ डॉक्टर लाल। ओके, जिस तरह डॉक्टर मोहसन ने बता दिया, ये क्रेनियोसाइनोसिस केस यस थोड़ा सा वो केस होता है, डिफिकल्ट हो जाता है ना, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल यही होते हैं जो उसने बता दी। इसमें एक चीज है कि क्लिनिकली अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो यू कैन गो फॉर फंडास्कोपी इन क्रेनियोसाइनोसिस। ये वाहिद है बच्चों में जिसमें फंडास्कोपी हम कर सकते हैं, क्योंकि फोंटेनिल क्लोज है, प्रेशर ज्यादा है, तो दिस पेशेंट माइट हैव पेपिलोइडेमा एज वेल। ठीक है। दूसरा, जिस तरह उसने बता दिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइपोथर्मिया एंड हाइपोटेंशन ड्यूरिंग सर्जरी, वी शुड टेक केयर फॉर दैट, क्योंकि बंदा लगा होता है सर्जरी करते और आपको पता नहीं चलता, एंड ब्लड लॉस ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, वी कैन हैव प्रॉब्लम। बाकी ठीक था, इट वाज गुड, लेकिन इसकी वही क्रेनियोसाइनोसिस एग्जामिनेशन में एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एग्जामिन द हेड वी शुड कम फ्रॉम बैक। ऊपर से आप देख लें, ये कुछ चीजें हैं जिसको हमने बैक से आके सर देखना है। इस तरह क्रेनियोसाइनोसिस है, जब भी प्रोक्टोसिस पेशेंट का हो तो उसमें भी हम बैक से ऊपर से आके देखते हैं, तो इसका ख्याल रखिए कि आपने बैक और ऊपर से आके सर देख ले ताकि आप सही फिगर पॉइंट आउट करें, उसकी जो भी है चीज कर ले। इसमें जो सर्जिकल ऑप्शन है, एक तो वही जो हम स्टेप क्रेनेक्टोमी करते हैं, लेकिन आपको और चीज भी आनी चाहिए जिसमें वो पाई टाइप क्रेनेक्टोमी भी करते हैं, या जिसमें एडवांसमेंट जिसमें मॉर्सिलेशन वगैरह कर लेते हैं। तो वी शुड नो अबाउट ऑल ऑफ देम, ये चीजें पूछी जाती है क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है और अगले दिन यू विल बी कंसल्टेंट, तो ये आपको ये चीजें आनी चाहिए। बाकी डॉक्टर मोहसिन ने बड़ा अच्छा वाइवा दिया आपसे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वही उससे पूछे, सो इट वाज गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, फॉर नेक्स्ट किसका है? नेक्स्ट मेरा है, आई थिंक। who's the I'm sorry, Dr. Hassan Bari will take the next case, and Dr. Jawad, are you with us? Let me unmute you. जी डॉक्टर जवाद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। तो काइंडली आप जब डिस्क्राइब करें अपनी एग्जामिनेशन तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें, थोड़ा सा शॉर्ट करें, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। आप वाइवा पे ज्यादा फोकस आ जाए ताकि आपको, ठीक है? ओके सर। दिस इज द केस। Dr. Jawad is a 35-year-old female patient. और सॉरी, जो बंदा जिसका एग्जामिनेशन होता है तो वो अपनी कैमरा बयान करे ताकि हमें नजर आ जाए। जी सर। जी एहसान सर, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum. Dr. Jawad, 35-year-old female patient, examine the face, please. Okay sir. First I will introduce myself and then take consent. Then I will do inspection of the face, first from the front, then from the side, then from up and from behind. Then I see a visible proptosis of the left eye.
then I will inspect there is chemosis, visible pulsation or any scar. Then I will palpate it. Keep describing this picture. So you don't see any chemosis. So whatever this picture is. Okay, there is no chemosis. There is no visible pulsation, and there is obvious proptosis of the left eye. Sir, I would palpate it कि इसका प्रेशर ज्यादा है कि नहीं है, हार्ड है. I will palpate the bony margin around it. I will measure it कि how much there is proptosis. Then I will auscultate it, sir, and with that I will look. I will go for the associated exam. I will look for the eye movement. I will look for fundoscopy. And I will look for the visual acuity and visual fields, and I will look for the temporal bones. If there is any swelling of the temporal bones or not. And after that, sir, I will ask about history of trauma. Dr. Jawad, इनकी जो eye movement है, just full range, eyelid, दूसरा जो है vision is slightly decreased, 6.1. Yes, sir. Trauma की कोई history नहीं है. What were you thinking because of trauma? क्या होगा trauma की वजह से? Trauma की वजह से सर हमारे साथ वो carotid cavernous fistula हो सकता है, उसकी वजह से proptosis होती है सर. पर उसमें chemosis और redness भी आ जाए. Yes sir, उसमें chemosis. और auscultation पे? Auscultation पे सर उसमें bruit होती है सर. ठीक है. So there is no history of trauma, so CCF is out of question. Okay. Okay sir. Now. Then I will look for, sir, any orbital tumor or any intracranial tumor extending into the orbital cavity, sir. So your differential diagnosis is it is a retroorbital tumor or a retrobulbar कोई है, क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, क्या differential? हमारे साथ orbital tumor हो सकती है, sir, intracranial tumor होते हैं which are extending into the orbital cavity. तो orbital tumor में हमारे साथ सर orbital meningioma हो सकता है, और इसके साथ hemangioma हो सकती है, pseudo tumor हो सकती है, infection हो सकती है, inflammatory हो सकते हैं, और जो intracranial tumor है सर उसमें हमारे पास sphenoid meningioma हो सकता है, या जो fibrous या sphenoid wing है उसकी fibrous dysplasia हो सकती है, or any other bony tumor, sir. अच्छा, what is pseudotumors? Sir, pseudotumors are, yes, sir, these are just like they are not true tumors, but they have a mass effect due to which there is protrusion. Mass effect कहाँ पे होगा? और सबसे commonest orbital cavity pseudotumor की. जी सर. सबसे ज़्यादा commonest cause क्या है pseudotumors की? Hemangioma, sir. What about fungus or inflammatory or tuberculosis, sir? चले, हम आपको इसका what investigation would you like to do? Sir, I would like to do MRI brain with contrast and orbital cuts. Okay, Dr. Farooq, can you show the MRI scan? Can you describe the MRI scan, please? This is axial view T1 with contrast-weighted images which show extra axial lesion if the left temporal area extending into the orbital cavity, sir. The tumor is, I would... The tumor extending into the orbital cavity? The tumor is, no sir, there is associated hyperostosis of the bone with tumor, sir. Hyperostosis of the bone, yes. Yes, what sir. do you think it is? I think, sir, it is a sphenoid wing meningioma, sir. Can it be sarcoidosis? Is there any? There will be no, sir, bone hyperostosis with sarcoidosis. इस जगह पे किस किस्म के meningiomas होते हैं? Can you classify sphenoid wing meningiomas? Sphenoid wing meningioma are classified into 3 types, sir. One is lateral, one is middle, and one is medial.
The later one is also called terminal. The middle one is alar, and the middle one is clinoidal, sir. Good, excellent. ये कहाँ से originate होते हैं? Sir, ये arachnoid capsule से originate. So now this patient has come to you, and how would you proceed? What would you do with this? It's a small one. Yes, sir. It's less than 2 centimeters in size. What options do you have to treatment? Sir, I have treatment option of radiosurgery and surgical option, sir. I see. Radio surgery से पहले आप biopsy करेंगे या नहीं करेंगे? Biopsy, जी sir. Radio surgery is probably for a very old and infirm, and who would do it? Yes, sir. You got any medical management? Medical management, sir, देखेंगे if the patient is having any fits, we will give steroid, we will give anti-epileptic, and if there is, I don't see any edema, sir. The patient is कि मैंने इसकी surgery नहीं करवानी. Do you have any option for us for? Is there any medical treatment for atypical meningiomas? I agree with you. Just I will give you extra marks for that. Yes, medical management. आजकल सर कीमोथेरेपी आई है, लेकिन वो randomized control trial में भी चल रही है सर. वो day approved नहीं है सर. अगर आप नाम बता देंगे तो I'll give you extra mark. I have read it somewhere, but sir, I now have forgotten. Yeah, this is for extra marks, so I wouldn't have. Interferon, people are talking about, yes. About a Western telling. How would you proceed with this patient? Would you do surgery, or अगर आपकी surgery से इसका prognosis बेहतर हो जाएगा? सर सर्जरी से prognosis तो सर अगर ये मुश्किल है सर कि उससे prognosis बेहतर हो जाए. Prognosis कम करने के लिए क्या करेंगे? सर ये जो स्फिनॉइड बोन है इसकी थोड़ी ड्रिलिंग करेंगे सर, और ऑर्बिटल एडवांस में प्रोसीजर करेंगे. लेटरल ऑर्बिटल वॉल है सर, इसको थोड़ा वो करेंगे, लेंगे, वो तो मेनिंजियोमा को एक्सरसाइज करेंगे. जब आप उसको लेंथन करेंगे वो तो आगे नहीं चले जाएगा. चलिए, सर्जरी कौन सी करेंगे आप इसकी? कौन सी अप्रोच से करेंगे? सर टर्मिनल क्रिएटमी विद द मॉडिफाइड orbitosacchomatic approach, sir. Would you do orbitosacchomatic approach for this? No, sir. This is a medial sphenoid wing. You Yes. can do with the terminal approach. Yes. Orbitosacchomatic किसके लिए करेंगे? It's a big procedure. It's काफी उसके complications. Yes. जब हमें सर थोड़ा मिडिल वो चाहिए होता है एक्यूडोर, तो उसके लिए सर मिडिल विंग स्फीनॉइड में जो ऑर्बिट में आई को ऑर्बिटल तो भी नहीं है. इट्स नॉट एक्सटेंडिंग इनटू. The only reason it's causing proptosis is because of hyperostosis of the. उसके लिए अगर आपने hyperostosis को मैनेज करना है तो then yes you can do that. Otherwise only for the tumor you won't do that. Yes, sir. What are the complications of this procedure? Now, can you describe the procedure terminal craniotomy for me? Yes, sir. Craniotomy, we put the patient in a supine position with the head tilted to the contralateral side. Then we give incision about 1 centimeter interior to the tragus and follow up to the hairline. Then we do, sir, myocutaneous flap, and then we do burr hole and do a craniotomy. And after that, we open dura. The dural base would be to the temporal bone side, sir. Would you then flush to the कहाँ तक जाएंगे? Temporal bone को involve करेंगे, नीचे तक जाएंगे? Yes, sir. जो sphenoid wing है सर, उसको drill करेंगे सर. जो extradurally जाएंगे और yes, sir. तक के intradurally जाएंगे? We usually go, sir, extradurally, sir. Yeah. You do it more like आप जिस तरह aneurysm की surgery कर रहे हैं? जी sir, we usually do extradurally, sir. Do this bone drilling. इसके बाद क्या करेंगे? You will remove it piecemeal. Yes, sir.
Yes, sir. I will remove it piecemeal with first devascularizing and debulking the tumor, sir, and dissecting it, and I will coagulate the dura at the base of the tumor, sir. उसके पोस्ट ऑप क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? Post-op complications, sir, we can have fits or hematoma at the tumor bed or any remote hematoma, sir, and vascular injury हो सकती है, nerve injury हो सकती है, sir, and CSF leak हो सकता है, sir. चलिए, आपने you have done a successful surgery. You have gone home the next day. Your resident rang you and said, "Yes, sir, the patient is unconscious." जी sir. What things क्या क्या हो सकता है? I will first secure the airway, sir, and then ask hematoma हो सकता है, sir, acute hydrocephalus हो सकता है, sir, bleed हो सकता है, sir, at the tumor bed, sir, or in remote. Seizure हो सकता है? Yes, sir, seizure हो सकता है. I will take a small history from the attendant accompanying this patient, sir, कि क्या हुआ है. So, do you do post-operative MRI scans routinely? No, sir, in our setup we don't do it. अगर आपके पेशेंट का रिलेटिव है, वो कहता है कि सर आपने पूरा नहीं किया, जी सर, वो आप कब करवाएंगे MRI स्कैन? सर हम तो यूजुअली करते हैं जब हम 3 to 6 मंथ बाद करते हैं, लेकिन फर्स्ट पोस्ट आप डे भी कर सकते हैं सर. कब तक स्कैन आप कर सकते हैं जिसमें आप यू कैन टेल के आपने कोई भी ट्यूमर के बाद एनी ट्यूमर सर्जरी, इफ यू वांट टू सी हाउ मच यू हैव रिमूव्ड द ट्यूमर, what is the best period to get the MRI scan done? 3 months, sir. 3 months or late as 6 weeks to 3 months? और फौरी तौर पे ऑपरेशन के बाद अगर आपने कराना हो तो जी सर, कितने पीरियड में कर सकते हो? सर हम तो यूजुअली 5वें दिन कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं सर. चलिए, तो क्यों नहीं करवाते लोग? Usually the people talk about 48 to 72 hours. Yes, इधर हमारे साथ सर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, पेशेंट नहीं करवा सकते. फाइनेंशियल इशू आप छोड़ दें, यू आर वर्किंग इन NHS जहाँ पे मनी इज नो. रूटीनली स्कैन्स कराते हैं तो कौन कौन से पीरियड में आप करवाते हैं? यूजुअली पोस्ट ऑप, इमीडिएट पोस्ट ऑप करवाते हो सर, पे लेट फॉलो अप करवाते हैं. चलिए ठीक है. अगर वो फैमिली पूछती है कि सर मेरे बाकी बच्चों को हो सकता है कि सर जरूरी नहीं है, लेकिन कंजेनिटल कुछ सिंड्रोम जैसे उसमें होती है सर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सर फैमिलियल नहीं है सर. एंजियोमस में जीन फाइंडिंग क्या होगी, कैसे अगर आपने करना होगा, इसमें क्या, इसको भी एक्स्ट्रा नंबर दूंगा आपको पहले. सर इस क्रोमोसोम पे क्या प्रॉब्लम होगी? कोई जीन का नाम आप बता सकते हो? NF22 जीन होती है, कौन सा क्रोमोसोम? एक्स्ट्रा नंबर ये क्योंकि बिकॉज वी आर. सर आप NF2 की बात कर रहे जो उसमें जो मेनिंजियोमा, उसमें मल्टीपल मेनिंजियोमा हो सकती है, तो आप उस जीन की बात कर रहे हैं सर. वो तो दूसरी होती है. इसमें 22 क्रोमोसोम. मेनिंजियोमास में कौन से क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होगा? एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, यू नो, रूटीनली वी डोंट आस्क दिस. 22 सर. वो तो मैं कहते हैं. चलिए ठीक है, टाइम हो गया है फरूख कि अभी है, वी कैन. सर कोई किसी और ने कोई चीज पूछनी होगा? डॉक्टर लाल शायद कुछ कहना. You were answering very, most of your answers were exact. And I think you would definitely pass this. अगर ये कोई भी मेरे अलावा भी कोई भी एग्जाम ले रहा होता, these are the basic questions we would have liked to ask. बाकी ये जो मैंने मैनेजमेंट उसके पूछे थे, because we had time, we would have been extra mark के लिए. You were quite good. जी डॉक्टर लाल. अच्छा, यस, इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन और काफी क्वेश्चन वही होते जिस तरह डॉक्टर बारी ने पूछे और वही आपने बड़े अच्छे जवाब दी. इसमें ये ऑर्बिट का जो शॉर्ट केस है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ ए पेशेंट विद द प्रोप्टोसिस इन द डिपार्टमेंट, अभी एग्जाम कराची में है, अगर किसी भी हॉस्पिटल में प्रोप्टोसिस का मरीज हो तो डेफिनेटली दैट विल बी एन एग्जाम एज अ शॉर्ट केस.
इसमें जब कमांड मिलती है आपको एग्जामिन द ऑर्बिट, तो आप सामने तो आपने ऑर्बिट सारे देखे, लेकिन देयर इज प्रोप्टोसिस ऑफ कोई लीजन है। अच्छा, इसमें आपने मेजरमेंट नहीं किया, आई थिंक आपने जो प्रोप्टोसिस मेजर नहीं किया। ठीक है, ओके गुड। तो इसमें लीजन या ऑर्बिट का अपना है या कहीं और से आया है, जिस तरह डॉक्टर बारी ने भी इस पे जोर दिया। तो और कहाँ से आता है, या तो नेजोफेरेंज से भी जा सकता है, आपने देखा फंगल लीजन बाकी ट्यूमर हो सकते हैं, तो आपने नेजोफेरेंजियल जस्ट एक लुक दे दे ताकि वहां पे कोई लीजन तो नहीं है। और ऊपर से जब लीजन आते हैं तो आपने देखा या फ्रंटल लीजन से होगा या स्फेनाइड लेवल से होगा, तो आपने स्फेनाइड जो टेम्पोरल रीजन पाल्पेट करने हैं, अगर इसमें देख ली तो उधर भी बोन की थिकनेस नजर आ रही है, तो जस्ट फील इट, आपके जहन में हो कि यस स्फेनाइड मेनिंजोमा, स्फेनाइड विंग वाले मेनिंजोमा कैन एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी या हाइपरस्टोसिस करते जिस तरह इस पेशेंट में हो चुका है। सो आपने वो फील करना है। इस पेशेंट में कभी कभार पूछते हैं कि भाई अगर आपने एक क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे, तो उसमें फिट्स का जरूर पूछिए। ठीक है, दिस इज वन। फिर जब इन्वेस्टिगेशंस की बारी आ गई तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि भाई और क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो आपने सीटी स्कैन का जिक्र जरूर करना है टू नो अबाउट दिस बोन। और बाकी आपकी मैनेजमेंट भी ठीक है बिल्कुल। इस पेशेंट में ऑपरेशन की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, व्हाट आर योर कंसर्न अबाउट दिस पेशेंट? Sir, can we move to the next case? Thank you, Farooq. And we need to wind up till 1 p.m. So we will try to cover it up. I have another each case in 7 minutes. I have another commitment, so I will beg your leave. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. So for next case, Dr. Amir Sagir will be the examiner. And we have Tabriz. Dr. Tabriz. Hello. करो जी डॉक्टर आमिर, आपकी आवाज आ रही है. Let me unmute Tabriz. So Dr. Tabriz is the candidate with you, and this is the case. Dr. Tabriz, can you hear? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you, Tabriz? Shukr, alhamdulillah. Good. Okay, Tabriz, your instruction is examine the face. Okay, sir. First of all, sir, I will introduce myself to the patient, and after greeting, I will take consent for examination. Then I will start my examination by inspection. By inspection, I will look at the face of the patient, and that I will look from the front. I will look for any organomic, any rhinophyma increase in size of the nose, and I will also inspect from the side of the face, and also I will also inspect inspect the neck region, and I will this patient, I will ask the patient to protrude his tongue to see any macroglossia. If there is, in this patient, it seems that there is increase in the size of the nose and the tongue. So I will go for the examination of the upper cranial nerves. For that, I will first start with the examination of the first cranial nerve, and that is the olfaction. After olfaction, I will check the vision of the patient, visual acuity of the patient, visual field especially, and in which I will see for any bitemporal loss of vision. And after that, I will do my examination of the eye fundoscopy. And in fundoscopy, I will check for any papilledema or any atrophy. And after that, I will check for the fourth, fifth, and sixth cranial nerves. I will do the extraocular movements. And after the extraocular movements, I will check the sensation, and I will check the crude touch and fine touch in the forehead, and the V1, V2, and V1, V2, and V3 area. And after that, I will check the corneal reflex for the examination. Okay. I will check the corneal reflex. I will check the jaw jerk. And after that, I will ask for extension of examination. And extension of examination, I will do the Fallon test, and I will do for auscultation of the heart and any abdominal examination for any organomegaly, sir.
And I will ask two questions, and after permission, I will ask about any libido loss of the patient, and I will also ask every carpal tunnel symptoms during night time. You still have time. And I will also do I will also do the other cranial nerves examinations, sir, in the extension, and sir, what you are perceiving in this patient? Examination or heart auscultation, sir. That will be my extension, and Fallon test. And for carpal tunnel symptoms, sir. Okay. What's your differential? And I will also go, sir. I will also do the frontal lobe examination, sir. Okay. What is the frontal lobe examination you like to perform? Sir, in frontal lobe examination, I can do, sir, for any glabular tapes or pronator drift. I will see for pronator drift, glabular tape, and pulmomental reflexes. I will see, sir. Okay. Yes. You still have time? Hello, Tabriz. Anything yes, sir. else you see in this patient? You have 3 minutes more. Sir, you can move towards the Viva and investigation. Okay. Right. Okay, right. Okay, Tabriz, by looking at his face, what is your general perception? Sir, by looking the face of the patient, it seems to me that the patient has rhinophyma, sir, increase in the size of the nose, and his lip sizes seems to be increased, sir. So there is a feature. How can you describe his face? Yes, sir. How can you describe his face? His general feature? There is our coarse facial structure, sir. The forehead is bossing. There is a frontal bossing of the forehead. Good. The nose size seems to be enlarged, and the lip size also seems to be enlarged in this picture, sir. Other than that, in this picture, I will ask the patient to open his mouth and to see the size of the tongue for any microglossia, sir. And I will also see the size of the jaw. There is for any prognathism. What you are expecting in cranial nerves? Sir, in cranial nerve, yes, sir. In cranial nerve examination, sir, I am suspecting, sir, papilledema or optic atrophy is according to the status of the patient, sir. Why papilledema? There can be, sir, due to the pituitary macroadenoma, there can be compression the optic chiasma. What you find pituitary macroadenoma, and why do you find it? Sir, the facial features are enlarged, so I am suspecting any. I'm talking about vision, beta. I'm talking about cranial nerve. Okay. Yes, sir. What you find in his vision? Any deficit in fact? Yes, sir. The visual acuity of the patient will be decreased, sir, and there will be visual field cuts, sir. Especially in this case, there will be bitemporal hemolapsia, sir. Okay. Temporal loss. There will be temporal loss. You should mention bitemporal hemolapsia first time. Right? Okay. At the first, whenever you ask for cranial nerve, okay, you go for bitemporal hemolapsia whenever you are expecting pituitary enlargement or pituitary adenoma enlargement, right? Okay. Okay. What else you can find in this patient? Okay, right. Sure. For investigation, how you investigate this patient? Sir, I will do, sir, some hormonal profile work, sir. I will do like specific investigation, sir. What in hormonal
Hormonal profile, sir, I will go are the pituitary hormone workup, sir. I will especially growth factor. Yes, sir. Okay, we have short time for right. Okay, we go for specific things. Okay, just specific, sir. investigation, blood investigation you like to do for pituitary patients, right? Okay, quickly. Yes, sir. I will, in the specific investigation, I will do, sir, MRI brain with contrast Blood with pituitary protocol. I'm asking for blood investigation. What blood investigation you like to do in pituitary adenoma patient? Blood investigation, sir, I will do, sir, hormonal profile, sir. I will especially growth factor, insulin like growth factor 1. And growth hormone also, sir. Other than that, I will go for prolactin level, sir, and other hormone level as well, sir. Other hormone level what? Just tell me the specific blood test you send in all pituitary adenoma patients. सिंपल सवाल है ना बेटा, आप एक्सपेक्ट पिट्यूटरी के जब भी एक्सपेक्ट करते हो आप भिजवा देते हो ना, तब लिख देते हो कुछ टेस्ट 5-6 चीजें लिख देते हो ना, वो 5-6 चीजें क्या लिख देते हो, बस ये बता दो जल्दी से, इतना लंबा क्यों ले जा रहे हो? प्रोलैक्टिन लेवल लिख देते हैं, कर दिया तुमने, इंसुलिन कर दिया, और क्या क्या करते हैं जल्दी से बता दो। प्रोलैक्टिन लेवल, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, टीएसएच देते हैं सर। चलो और क्या देखोगे शाबाश? सर इसमें TSH, T3 सर, T4 ग्रोथ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन लेवल सर। से सिक्रीट होती है ना, ठीक है, तुम बता क्यों नहीं रहे तुम? तो सिंपल सी चीज है, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? मैक्रो एडिनोमा तुम सस्पेक्ट करो, ठीक है, कितना कैसा होता है? सिक्रीटरी होता है, नॉन सिक्रीटरी होता है मैक्रो एडिनोमा? सिक्रीटरी क्या होता है, नॉन सिक्रीटरी क्या होता है? सॉरी सर, सिक्रीटरी ट्यूमर होता है मैक्रो एडिनोमा या नॉन सिक्रीटरी होता है बेटा? और सिक्रीटरी ट्यूमर्स क्या होते हैं, नॉन सिक्रीटरी क्या होते हैं? पर वो कह रहे हैं टाइम नहीं है हमारे, नॉन फंक्शनल होते हैं सर। नॉन फंक्शनल में सर हमारे पास जो है हार्मोनल सेक्रीशन उसमें नहीं होती, और फंक्शनल में हार्मोनल सेक्रीशन होती है सर। अच्छा, कौन से होते हैं हार्मोनल सेक्रीशन वाले? जल्दी से बताओ कौन से ट्यूमर्स होते हैं हार्मोनल सेक्रीशंस वाले सर? माइक्रो एडिनोमा भी हो सकते हैं, मैक्रो एडिनोमा भी हो सकते हैं सर। उसमें जो है ग्रोथ, व्हाट यू सी इन दिस एमआरआई, फरूक ने एमआरआई लगाया है, how can you describe this MRI quickly? Sir, this is MRI brain, axial cut and sagittal cut, contrast, axial cut, contrast enhanced imaging, and T1 weighted contrast enhanced imaging. What is your positive finding in this MRI? Any finding here? I can see, sir, head contrast enhancing lesion in the cellular and supracellular area, sir. Achha. What you are suspecting this? Sir, I'm suspecting a neoplastic lesion, sir. It could be pituitary macroadenoma, sir. Most probably it is benign or malignant. It could be malignant. Management, sir. In management, you are suspecting a benign lesion in the region of pituitary or a malignant lesion. Sorry, sir. ये लग रहा है या malignant लग रहा है आपको? सर कंट्रास्ट एनहांसमेंट इसकी सर हेटेरोजेनियस है सर, मैलिग्नेंट नहीं लग रहा सर। क्यों सर? चलो, how you manage this patient? First, after doing the hormonal work and RD perimetry and Humphrey perimetry, and after consultation and taking consult, I will consult the patient for surgery, sir. If there is a visual loss, and then I will go for surgery, sir. Any medical management you can offer this patient? Yes, sir. We can give the medical management bromocriptine, sir, and we can also give the growth hormone secreting antagonist medication, sir. Good. Or what else? And if there is visual loss and a patient has symptoms of visual.
after bromocriptine, what is your second line drug? The second line drugs are growth hormone antagonist, sir. वो तो थर्ड लाइन पे आ जाता है. सेकंड लाइन में क्या होता है बेटा? ब्रोमोक्रिप्टिन के बाद उसके बाद क्या यूज करते हैं? केबरगोलिन, सर. Good. Okay. Okay. What is it? Medical management is better than the surgical management? Is in this case, yes or no? Sir, ask बीच में रुक गई, sir. Sorry. Is the medical management is better than the surgical management in this case? No, sir. Surgical management will be a good option, sir. Okay. You want to start the medical management along with the surgical management? Yes, or sir. Only and what drug you like to start along with your surgical management? In surgical management, sir, we can have two. We have two. What options. drug you like to start along with your surgical management? I will start medical management along with surgical management, sir. If the कौन growth सी दवाई start करना चाहोगे बेटा? You have options. अगर तुम्हें कुछ है कि भाई इसमें कोई दवाई इस्तेमाल करें तो bromocriptine. अच्छा. Yes, sir. क्यों? Why? चलो छोड़. How you perform surgery? What approaches you have for this Sir, kind of? We have two approaches, sir. We can do endoscopic endonasal approach, sir, and we can also do open approach by. We can also do open approach, sir. Only endoscopic approach? Endoscopic endonasal and open approach, sir. एंडोस्कोप नहीं है तो फिर तुम उसको अप्रोच नहीं कर सकते. ओपन अप्रोच क्या होता है? ओपन अप्रोच. एंडोनेजल अप्रोच में सर माइक्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं सर, एंडोस्कोपिक भी कर सकते हैं सर. तुम आराम से बोलो ना, तुम कहते हैं बीच में स्किप क्यों कर रहे हो चीजें? माइक्रोस्कोप कहाँ से क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक एंडोनेजल अप्रोच कहाँ से जाएंगे, किस तरह करेंगे, स्टेप्स बता सकते हैं? यस सर. चलो एंडोस्कोप तुम बार बार मेंशन करो ना, चलो एंडोस्कोप का फिर बता दो. एंडोस्कोपिक अप्रोच में सर हम सबसे पहले पेशेंट को कंसल्ट करते हैं. पेशेंट को सुपाइन पोजीशन बता दो बेटा. सुपाइन पोजीशन में सर पेशेंट को. चलो ठीक. चलो ठीक है. ओके ठीक है. थैंक यू बेटा. थैंक यू. Okay. Thank you, Dr. Amir and Dr. Tabriz. So we are moving towards the case 7. Dr. Mashal will be the candidate, and Dr. Lal Raman, sir, आप होंगे एग्जामिनेशन. ओके. So Dr. Mashal, मैं आपको अनम्यूट करूं. मेरे ख्याल में शी इज माय कैंडिडेट, तो आप शी इज माय स्टूडेंट, तो किसी और से कह दे. तो मैं डॉक्टर मोहसिन से कह देते हैं. आई गेस डॉक्टर मोहसिन आर यू हियर? जी डॉक्टर मोहसिन, मैं आपको अनम्यूट कर. जी डॉक्टर मचल, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. काइंडली 7 मिनट्स है हमारे पास. 2 मिनट में आप अपनी एग्जामिनेशन बताएं कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद वाइवा स्टार्ट होगी. डॉक्टर मोहसिन, this is your female patient. Let's start then. Yes, sir. This is a 60-year-old female, and you have to examine the head. So you can proceed and just tell me what steps will you do, and we can go with the findings in the later. Okay, sir. Assalamu alaikum, sir. First of all, I'll take the consent and I'll introduce myself. After that, I will start with the inspection. I will start of the inspection of the head. I will look for any. I will first of all I will expose the area and I will apart the hair, and after that I will do the inspection. I'll look for the skin of the lesion, and I will look for any discoloration, any sinus or any punctum or any depression in it, and I will look for general gross appearance of the swelling. After that, I will do the palpation. On palpation, I will palpate the swelling
circumferentially, and I will check the temperature of the swelling and compare it with the normal skin. And after that, I will look for the I will look for any type of fluctuation. I look if the swelling is hard or soft, and after that, I will feel the bony edges that are deep to the swelling circumferentially. I look for the bony edges, and then I will look for the size of the swelling. I will measure it, and after that, I will look for the I will look for the I can do the trans-elimination of the swelling, and after that I will check for the any bruit. I will auscultate it, and then after that, I will go for. I will take permission for the relevant examination, and for the relevant examination, I will. I will look for the. I will ask the patient for the. To raise her hand, and I will look for the pronator drift, and I will look for the power bilaterally, and after that, I will check for the. I will check for any stereognosis and any finger agnosia in the patient bilaterally, and I will then after that I will also do the examination of eyes. I will look for the visual acuity, and after that I will check for the lymph nodes and the cervical lymph nodes, and after that I will do the auscultation of the chest, and after that I will look for the lower extremities. I will check the plantars bilaterally, and in the end I will look for the I will ask for the fundoscopy, and I will look for the papilloedema. Okay. Very nice. I think we can go to the findings now. So on your examination, you get these findings. This is a firm swelling in the midline of the skull, just behind the coronal sutures. There is no pulsation in it. Overlying skin is intact, and there are no neurological deficits. And there's a scar mark at the neck. So what are your differentials now? Okay, so it can be any neoplastic lesion. Yes. And it can be an infective lesion. Yes, we're talking about differentials. It can be anything at this point. Yeah. Yeah, there can be a neoplastic and infective lesion. So how would you like to investigate or work further on it? I would like to go for the MRI brain with and without contrast. Okay. Anything else you want to get? Yeah, CT 3D of the skull. Okay, we got CT 3D. There's a scar mark on the neck as well. Suppose she had a thyroid CA. Yeah, so yeah, I will go for the ultrasound neck initially, or supposedly she had a history of treated thyroid carcinoma. I would like to go for the METS workup, metastatic workup, yeah. Some functional workup. Okay, you ordered an MRI, and these are the films that we got. So can you please describe the scans? Okay, so this is MRI brain plane on the right side. These are the sagittal cuts, and on the left side there is a coronal cut MRI brain with contrast, and on the non-contrast image there is a mixed intensity lesion that can be appreciated at the
vertex of the skull, and the lesion is extending intracranially as well. There is the lesion is well circumscribed, and it is present both on the intracranial and the extracranial compartment, and it is compressing the brain parenchyma from the intracranial compartment. And on the contrast images, the lesion is on the contrast coronal images, the lesion is homogeneously enhancing on the intracranial part, and it is resulting in the compression of the surrounding parenchyma. There is no perilesional edema, and the extracranial compartment is heterogeneously enhancing, and it is also well circumscribed, and the lesion the lesion of the both intra and extracranial compartment is involving the soft tissues and most probably the bone, and it is also there is also enhancement of the dura adjacent to the intracranial compartment component of the lesion, most probably the dural tail, I guess. Is it involving the sinus, sagittal sinus, or not? Yes, on the contrast images, it can be appreciated. The lesion is extending and involving the superior sagittal sinus. Up to this fluid is there. There's a flow in it or not, or is it obstructed? Actually, the flow can be appreciated, so I think it's not obstructed. Okay. What are your differentials now? There can be a meningioma. Okay. Or any bony lesion that. What kind of bony lesions? Can you name any of few? Yeah, it can be an it can be mets. It can be a metastatic lesion that is involving the bone and the parenchyma. So what will help you differentiate that it's a met or it's a meningioma? Well, there is no perilesional edema, so this favors the probability of meningioma. But is it still extradural or it has become intradural? So time is up. We can add 1 to 2 minutes to just complete this case. Okay, what are your surgical options now? Well, I will go for the excision of the lesion with the. Yeah, I will go with the excision of the lesion. Okay, and what will you do about the bone? I will excise the bone and send it for biopsy. Would you like to do a small biopsy first so that you know what you're fighting with before you go in? Yes. Okay, so what can be the complications while operating in this area? Well, since it's invading the superior sagittal sinus, so we can have sinus injury, and apart from that, it's a huge lesion, so there can be bleeding complication starting from the scalp and then intracranially, and apart from that, there can be injury to the surrounding parenchyma, and there can be injury to the bridging veins that are on the so that are present around the superior sagittal sinus, and okay, there can be a post-operative infection. And family says they don't want surgery. Can you give radiation to this lesion? Since the size of the extracranial part is
huge. So first of all, I would like to go for the biopsy, and after that I'll Yes, plan my. thank you very much. I think our time is up. Well done. And if any other examiner wants to add or ask something from the candidate. अच्छा, इसमें और इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे आप ये दो स्कल के लिए? Sir, I would like to go for MRB. ठीक है. And CT of the skull, and apart from that, I would like to go for the metastatic workup as well. ठीक, गुड. बस यही क्वेश्चन होते एग्जाम में, जिस तरह डॉक्टर मोहसिन कदीर ने पूछा आपसे. और क्वेश्चन चूंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा हम ले रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है. वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम होता है, तो इतनी ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी फाइंडिंग सही हो, और बाकी वाइवा आसान होता है. ये यहाँ पे जो वाइवा हम ले रहे हैं एग्जाम में, यू समझे कि इसके हाफ का होगा. जी. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, for the next case, Dr. Majbi is the candidate. So, Dr. Lalaman, sir, आप examiner होंगे. Dr. Majbi. Assalamualaikum, sir. जी, वालेकुम सलाम. So, again, instructions are the same, that kindly complete your case in 7 minutes. So, this is the case. Okay, वही आपने अभी सारी केसेस देख ली. यानी इमेजिन करिए कि आप पेशेंट आपके सामने है, एंड यू शुड प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टेंस. और वही प्रिंसिपल है, पहले आपने जो कमांड के मुताबिक देखना है. उसके बाद व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग द एग्जामिनेशन, यू शुड गेट परमिशन. पहले अपनी इंट्रोडक्शन करा, ये सारी चीजें वही कर लें. 47 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है. अन एग्जामिनेशन आपको जो कमांड मिल रहा है, और शॉर्ट केस में इस तरह होता है एग्जाम में कि आपको एग्जामिनर नहीं बताता क्या करो, वहां पे लिखा होता है. और आपने जाके उस पर्ची को देखना है, एंड देन यू शुड स्टार्ट योर शॉर्ट केस. तो इसमें है एग्जामिन द लोअर cranial nerves. Sir, thank you for giving me this command. I'll first introduce myself to the patient, and I'll take consent, and then I'll start with the proper facial examination. I'll start with the facial nerve. Usme I'll see the forehead, overall any disfigurement which I can see on the face. Then I'll start from the wrinkling of the forehead, and I'll ask the patient to close her eyes formally. Present tense में बताएं, not in the future. जी sir. I'll say the patient to close her eyes, and I'll try to open them to see whether I can open the eyes or not. I'll say the patient to show her teeth and to smile, and I'll say her to inflate her cheeks, and I'll try to deflate it. Once I'm done with the 7th nerve, I'll also check the taste of the patient. I'll ask the patient on anterior 2/3 of the tongue, on right side and left side, so with sugar and salt. Once I'm done with it, I'll go for the 8th nerve examination. First of all, I'll see whether the patient's hearing is intact in both ears. And once I am done with it, I'll go for the Rene's and Weber's test. For the Rene's test, I will put the tuning fork first on the. First, I'll explain the patient, and then I'll first put the tuning fork at the mastoid. And I'll say the patient, when you stop hearing, then I'll bring that tuning fork in front of the ear, and then I'll ask the patient. I'll do this on both sides. And once I'm done with it, I'll do the Weber's test. I'll put the tuning fork at the glabella or at the vertex, and I'll ask the patient whether she can hear it on both sides equally or not. Once I'm done with it, I'll check the 9th and 10th cranial nerves. I'll say the patient to open her mouth, and I'll say the patient to do the eye examination, to see the position of the uvula, and I'll take the consent and explain that I'll do the gag reflex. So that can be a bit uncomfortable. So I'll do the gag reflex, and on both sides of the pharynx to see whether it is intact or not. Meanwhile, as the tongue is protruded, I can easily see if there are any visible fasciculations, as I have to see the hypoglossal as well. So I'll ask the patient to put the tongue on the inside the cheek, and I'll see both the sides of the tongue to
see the power of the tongue muscles. Then I'll examine the 11th nerve. I'll ask the patient to look on either side to examine the sternocleidomastoid, and then I'll ask the patient to shrug her shoulders to see the trapezius muscle. Once I'm done with it, I'll take consent. I'll take permission for relevant examination. So, sir, can I proceed for relevant? Yes. I'll examine. थोड़ा सा quickly आप इसको wind up करें. Already you have taken 4 minutes, I guess, just to explain that. Sir, I'll do. Okay, relevant में क्या देखें? What do you look for the relevant examination? Yes, sir. I'll do the cerebellar examination. I'll see the finger nose testing, the gait of the patient, Romberg's and dystidocokinesia, and also I'll see. I'll do fundoscopy to see for any papilledema, and I'll also see the pronator drift. I'll ask the patient to raise her arms and see the pronator drift and the plantars. These will be my. And also, sir, sorry. I'll also see skin for any visible skin stigmata, like any neurofibromas or any cafe au lait spots. So this will be my relevant examination. Okay, Farooq, इसकी findings हैं जरा दिखा. Okay, so these are the findings. नहीं, यही है. ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड sensory neural loss है और long tract signs वो positive है. Left trigeminal neurology भी है. Okay. Okay, so what do you think? Where is the lesion? So based on history and based on the examination and findings, most likely in left CP angle. Okay, so why you say it is in the left CP angle? So because there is left sensory neural hearing loss, and the long tract signs are also positive, so that it can be starting from the CP angle and compressing the brain stem. Okay. And also okay, it can involve the fifth nerve, so that's why. What is your differential diagnosis? Sir, most likely a neoplastic lesion in this case. So what type of neoplastic lesion it can be? Sir, my two topmost differentials would be vestibular schwannoma and meningioma. Okay, how can we differentiate clinically between meningioma and schwannoma? Sir, meningioma usually starts with facial nerve involvement, and it also involves the hearing loss is pretty late, and vestibular schwannoma starts with hearing loss involvement and then involves facial nerve जो है वो last में involve होती है, then it involves the trigeminal nerve mostly. So why the facial nerve is involved in the last? So because the motor fibers are very resilient than the sensory fibers, that's why. Okay. So what investigation you will advise to this patient? So first of all, I have a set of radiological examinations and audiometric examinations. So Farooq दिखाएं जरा उसका radiology. Okay. So क्या नजर आ रहा है आपको उसमें? So this is MRI brain. With T1 with contrast axial image, which shows a well-defined enhancing lesion, homogeneously enhancing lesion in the left CP angle, which is compressing the brain stem, and I can also appreciate a dural tail. Okay, so what is your diagnosis? So based on this imaging, most likely a meningioma, CP angle meningioma. Okay, so how can we differentiate between meningioma and neurofibroma radiologically? Sir, the schwannoma will basically have an acute angle with the internal. It arises from the internal auditory canal, so it will be like an ice cream in a cone appearance, and it will make an acute angle with the petrous bone. Whereas meningioma will have an obtuse angle, and it will be arising from the petrous, not from the internal auditory canal, and it will have an obtuse angle, okay, and it will also homogeneous contrast enhancement. जी ये आपके सामने MRI है. How you will manage this patient? हमारा टाइम खत्म हो चुका है. Extra question आपसे करना. Sir, yes, sir, audiometrics भी करेंगे because of the fact that the hearing loss is complete. नहीं इसको manage कैसे करेंगे आप? Yes, management कैसे करेंगे जी? So first of all, after counseling the patient and taking informed consent, I would like to go for surgery. So how you will operate? Sir, there are many approaches, but in this case, retrosigmoid craniectomy with excision would be. So how do you do it?
So the patient, after making the position in lateral oblique or 3/4 prone position, I will scrub and prep the patient. I'll mark the incision like 2 centimeter behind the ear, behind the auricle, and it will be a slight curvilinear incision that will follow the curvature of the pinna. ओके आपने स्किन इंसिजन दे दिया आपने अपने फिर बोन भी काटा आपने देन हाउ विल प्रोसीड So once dura is exposed, I will see if I'll dura कैसे खोलेंगे how do you open the dura in a Y shape or sorry sir, not Y shape, so C shape. okay then so we'll reflect the dura and we'll retract the cerebellum medially. Once we retract it, we can see the junction of the transverse and the sigmoid sinus. आपने ड्यूरा खोला और पूरा ब्रेन बाहर आ रहा है then what you will do? So we can open this. So there can be 2-3 options. If we have lumbar drain at that time, we can. नहीं तो आपने तो खोला है lumbar drain तो अपने पास ही नहीं किया तो परिज आप खुल चुके हैं. So we can have prophylactic phrasier at that time if we see that the brain is bulging, so we can. No, तो आपने नहीं किया ना अभी तो आपने ब्रेन खोला है बिल्कुल cerebellum bulge कर रहा है so how can you do it now? Yes sir. Okay, what complication can occur because of this surgery? Yes sir. So this surgery can cause so there can be deficits of the surrounding cranial nerves, like there can be facial nerve injury. The surrounding vessels, like in which nerves which nerves are more important for you? अगर उनकी involvement हो तो there might be more problems. So facial is important. This obviously hearing is gone. The left sensory neural hearing loss है. So I am more concerned about facial. टाइम खत्म हो चुका है. टाइम खत्म हो चुका है. इसमें कुछ चीजें जो कि important हैं यानी when a lesion is in the posterior fossa में पता चल गया कि उसकी hearing नहीं है तो posterior fossa is a very small place जिसमें काफी सारे structures हैं so we should look for all of them. Yes. समझ आ गया तो आपने यानी lesion is there तो ये कुछ भी हो सकता है it can affect the surrounding structure brainstem पे pressure डाल सकता है fourth ventricle compress कर सकता है there might be pressure on the cerebellum there might be involvement of the other cranial nerves तो सब चीजों को देखना अगर आपको एक की फाइंडिंग मिल रही है आपने सारे देखने हैं अगर आपकी एक की कंप्लेंट मिल रही है आपने सारे पूछना है इसमें आपने एक और चीज नहीं की जो कि इंपॉर्टेंट है आपने कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं की Yes sir. that is very important. Yes sir. अच्छा फिर उसमें when we are going to manage these patients तो और आपने ऑपरेट करना है तो आपने मॉनिटरिंग का जिक्र नहीं किया आपने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं की अपने बाकी गैजेट्स अरेंज नहीं की आपने हाइड्रोकेफेलस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने वो नहीं देखा तो जब आपने हाइड्रो मैनेज नहीं किया और आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप बाद में इसका फेशियल नर्व इंटैक्ट है ना और आपने आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी कि भाई मैं डैमेज न कर लूं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड hydrocephalus monitoring and about the other cranial nerves so we should know about these things okay yes so anyhow it was good thank you Lal, can I just say one thing please? Yes sir. Majubin? Yes sir. So this is in the cerebral pontine angle and there are a number of structures there and you're fixated on the facial nerve and the facial nerve of course functionally is very important. But when you're having a discussion, I want you to remember that in the cerebral pontine angle, where this tumor is, at the back of this tumor, is the anterior inferior cerebral artery. Yes, sir. And it is for very good reason that that artery is also known as the artery of life. So if somebody was to ask me, what structure would you avoid damage to in this area? That would be the first thing I would mention. Lal, I just wanted to make that point. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Farooq? Farooq, मेरे ख्याल में short cases खत्म हो गई. Yes, sir. We are done with the short cases. And thanks to all the examiners, especially Dr. Lal Rahman, Dr. Hassan Bari, Dr. Amir Sagir, Dr. Mohsin Kadir. Sir, thank you so much.
for joining us and giving us your experience and your nice Thank you comments. for आप काफी मेहनत कर रहे हैं और कई सालों से really it is very difficult to arrange such things. Thank you so much. Yes, sir.